Dear friends, welcome to the next lecture of our ongoing discussion on the topic of mechanical drives. इसके पहले वाले लेक्चर नंबर 9 में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पुलीस देखा था. We discuss about idler pulley, intermediate pulley, loose and fast pulley, and finally we discuss about guide pulley. While talking about guide pulley, there was a statement about a law of belting. With the help of guide pulley, law of belting is made possible. And at that time, I told that we will discuss about law of belting in detail. So today we are going to discuss about that. So let us understand what is law of belting. Actually, each and every phenomena occurring in nature or accidentally or intensely, it always follows some laws of physics, laws of nature. Similarly, here, belting is possible only when the law of belting, that is law of physics, must be followed. So, what is the statement of law of belting? If we see the statement, then the law of belting states that the center line of the belt, when it approaches a pulley, must lie in the mid plane of that pulley. मतलब कि when belt is in action and belt is moving toward a particular pulley, approaching a pulley, at that time the center line of that belt must lie in the mid plane of that approaching pulley. अब ये बात को हम डायग्राम के जरिए समझते हैं. सो कंसिडर दिस पर्टिकुलर diagram to understand the law of belting. Here, two pulleys are connected by a belt is shown in two different views, one view and second view. Here, the orientation of shaft is non-intersecting and non-parallel. दो एक शाफ्ट ऐसे है तो दूसरा शाफ्ट ऐसे है, नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल है. So, when the belting will possible, what is the law? It states, as we understood, that if this pulley is rotating in this direction, this belt is approaching to this upper pulley. ये बेल्ट, ये जो पुली ऐसे घूम रहा है तो ये बेल्ट ऊपर वाली पुली को ये डायरेक्ट अप्रोच कर रहा है. तो बेल्टिंग विल बी पॉसिबल ओनली व्हेन the center line of this belt approaching toward the pulley must lie in the center plane of this pulley. ये पुली का जो सेंटर प्लेन है उसी में वो अलाइन हो जाना चाहिए, तभी बेल्टिंग पॉसिबल होगा. Similarly, you understand it is in the another pulley, the lower pulley in second view of this diagram. ये बेल्ट है जो ये नीचे वाली पुली की ओर अप्रोच कर रहा है, तब ये जो सेंटर लाइन है ये पुली के मिड प्लेन से अलाइन हो जाना चाहिए. देन ओनली द बेल्टिंग इज पॉसिबल. Belting is possible only when the center line of the belt approaching to the pulley must lie in the central plane of the approaching pulley. इसकी वजह से क्या होगा कि जब बेल्ट पुली को छोड़ रहा है, when this belt is leaving this upper pulley, at that time it is not necessary that the center line should align with the central plane of the leaving pulley. That can be seen in other view here also. दिस बेल्ट इज लिविंग दिस लोअर पुली. ये बेल्ट जो है ऐसे जा रहा है, वो नीचे वाली पुली को छोड़ रहा है. तो उस वक्त ये बेल्ट का सेंटर लाइन है वो ये लोअर पुली का मिड प्लेन से अलाइन हो ऐसा जरूरी नहीं है. ओनली व्हेन द बेल्ट इज अप्रोचिंग टुवर्ड द पुली, देन द सेंटर लाइन ऑफ द बेल्ट एंड सेंटर प्लेन ऑफ द अप्रोचिंग पुली शुड बी अलाइन. बिकॉज ऑफ दिस what happened? You cannot revert the direction of rotation.
मान लो कि ये पुली को आपने उल्टा घुमा दिया तो क्या होगा, दिस बेल्ट विल मूव इन दिस डायरेक्शन एंड द सेंट्रल लाइन ऑफ दिस बेल्ट विल नॉट अलाइन विद द सेंट्रल प्लेन ऑफ द अप्रोचिंग पुली, ये ऊपर वाली पुली को अलाइन नहीं होगा. So there will be violation of law of belting. Same can be understood in this diagram. As the direction is revert, the belt will be move in this direction, the pulley will move in this direction. So approaching belt center line will be not aligned with this approaching pulley, and hence there will be violation of this particular law. अगर आपको इसी कंडीशन में रिवर्ट करना है तो जैसे हमने आगे वाले लेक्चर में देखा था कि वी कैन यूज़ अ गाइड पुली. अगर आप यहाँ गाइड पुली लगा के ए बेल्ट की डायरेक्शन को मॉडिफाई करते हैं, देन इट विल हेल्प, द गाइड पुली विल हेल्प टू मेक द पॉसिबल ऑफ फॉलोइंग द लॉ ऑफ गियरिंग. So I hope you understand what is the law of gearing and how it works. So while deciding the arrangement of the shafts and pulleys, you must have to take care that the law of belting must be followed. अगर ये फॉलो नहीं होगा तो belting will not possible, belt will no more remain on the pulley. So I hope all of you clear about this law of belting. Dear friends, we will continue with this kind of discussion of our mechanical drives. We will meet in next lecture, lecture number 11. And if you want to continue with this knowledge gaining approach, then you should subscribe this channel. Also, you can share these things to your friends or those who are interested to know about this particular topic. Thank you very much.